Light Language Meditation Forums welcome you. Me, Sushma Saraf, welcomes you to the journey of truth, of forgiveness. माफी, ये शब्द हमारे लिए नया नहीं और हम सब ने सुना ही है, क्षमा मांगने के लिए भी और क्षमा देने के लिए. We have heard about it. It is mentioned in our scriptures. It is mentioned in our ancient literature, the current literature if we read. अगर हम जो नया साहित्य भी पढ़ते हैं उसमें भी इसके बारे में बहुत ही उल्लेख किया गया है. It is always written the importance of forgiveness. क्षमा है क्या? Forgiveness means कि when I consciously choose, जब मैं consciously एक डिसीजन लेती हूँ कि किसी भी व्यक्ति या सिचुएशन के प्रति मेरे मन में कोई भी गुस्सा है, नफरत है, हर्ट है, एंगर है, इरिटेशन है, मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार. I am ready to let go of all that hurt, that anger, that pain which I am carrying. And I choose to do because I choose to be in peace. क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं शांति में रहूं. ऐसा नहीं है कि वो लोग forgiveness deserve करते हैं. हमारा मन बोलेगा, our mind will say, अरे ऐसे कैसे माफ कर दें? How could I forgive? How could I forgive them? They have done such so many things. How could I forgive them? मन बोलेगा हमारा, लेकिन हमारे मन को बोलना है, it's not because they deserve forgiveness, I deserve peace. क्योंकि हमें जिंदगी में शांति चाहिए, तो हम चयन करते हैं उन्हें माफ करने का. I choose to forgive them. I choose to forgive. I need to remind this statement to my mind. I need to remind this statement to my mind. There's a beautiful story I share. Once there was a school teacher and she asked her students that tomorrow just bring 1 kg of tomatoes in your bag. 1 किलो टमाटर लेके आने हैं अपने बैग में स्कूल के. तो okay, fine. Children obeyed the teacher. Next day they bring 1 kg of tomatoes. Fine. The teacher says nothing. उस दिन जिस दिन सब बच्चे लाए, तो the teacher says nothing and asked her to again bring that tomato the next day. Fine. Again the next day the students bring the tomatoes. फिर वो लेके आए, next day भी उनके बैग में ही था. This is the same statement the teacher keeps on repeating for few days. वो ऐसे ही बोलती रही बार. दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन. On the 4th or 5th day, the tomatoes just start becoming very loose. गुलगुले से हो गए, एकदम सॉफ्ट होने लग गए. 2-3 दिन 4 दिन तो ठीक थे. After 4th day, they just started losing their original shape. फिर भी कोई बात नहीं, teacher still say कि नहीं लेके आना है. Next day you need to bring. And children are not understanding why the teacher is not saying anything. How we need to use these tomatoes, and just only daily she tells us कि just bring it another day, bring it another day. कैसे इसको यूज करना है बता भी नहीं रहे और रोज बोलते हैं कल लेके आओ, कल लेके आओ, कल लेके आओ. कोई बात नहीं. 6th and 7th days में वो टमाटर पूरे खराब हो गए. After 6th or 7th day, the tomatoes started becoming rotten and they started smelling. Then the children told their teacher, "Ma'am, it's impossible to carry these tomatoes now. They have become rotten. We just can't bring them. Our bags are getting spoiled. हमारे bags खराब हो रहे हैं. बहुत गंध आने लग गई है. सड़ गए हैं टमाटर." And then the teacher told them,
Similarly, if something happens in a life, if somebody gives up pain just for a day or two, maybe it doesn't affect us. But if we keep on holding on to so long, it rotten our energy field. वो हमारी ऊर्जा को खराब करने लगते हैं. We need to throw them off. We need to let them go. Similarly, whenever something happened in our life, हमेशा परिस्थितियां आएंगी जब चीजें हमारे मन के मुताबिक नहीं होती हैं, लोग हमारे मन के मुताबिक नहीं चलते हैं. हम सोचते भी नहीं है कि ऐसा कुछ हमारे जीवन में हो जाएगा और हो जाता है. Maybe our partner leaves, we face a huge loss in the business because of our business partner, or maybe our children insulted us, our spouse doesn't take care of us. कभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, anything could happen. डेली इंसिडेंट्स में भी बहुत छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं और हम दुखी हो जाते हैं. लेकिन अगर हम उन चीजों को पकड़ते रहते हैं तो धीरे धीरे वो जैसे टमाटर सड़ जाते हैं, वैसे ही that energy start getting rotten, that start creating that blockage in our energy field. So if you read the definition of forgiveness in the dictionary, it clearly says it doesn't mean that if you're forgiving the people, they deserve forgiveness. It's just that you choose to let go of your hurt and pain because you deserve peace. That means I deserve peace. So हमें forgiveness we need to practice because this is one of the most efficient tool we all have. ये सबसे ज्यादा एक काम की चीज है हमारे लिए. अगर हम माफ कर देते हैं तो सबसे पहला फायदा हमारा ये होता है कि मेरे और उसके बीच में जो एक एनर्जी मूवमेंट है, हमेशा मैं कुछ दे रही हूँ, वो कुछ दे रहे हैं. If I am giving something to Praveen ji is giving that some energy to me. और ये लेना और देना it's continuous. I am giving, he is giving. I am giving, he is giving. So to stop the flow of the energy, one person has to stop giving the energy. एक व्यक्ति को रुकना होगा, तभी वो ऊर्जा का लेन और देन समाप्त होगा. In many lifetimes, because we have exchanged so much of energy between each other, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज किया है हर एक लाइफ में कि जब हम वापस इस लाइफ में मिलते हैं कभी कभी कुछ चीजें not so good. So if we feel we don't share very good relationship with somebody, है ना, sometime it also happens in our life कि हम किसी व्यक्ति से पहली बार ही मिले. Maybe I have met Dhriti ji first time in this lifetime. Then too I don't feel very good about her. तभी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा. अभी तक तो कुछ हुआ भी नहीं है हमारे बीच में. Nothing has happened yet. कोई बातचीत भी नहीं हुई. Then too I'm not feeling very good about her. Why? What's the reason? कभी हमने सोचने की कोशिश की, why? क्यों ऐसा क्यों हुआ? मिले पहली बार है, फिर वो हमें क्यों नहीं अच्छी लग रही? मैं उनके बारे में कुछ जानती भी नहीं हूँ, मैंने कुछ सुना भी नहीं है, फिर वो मुझे क्यों नहीं अच्छी लग रही हैं? It is just because that leftover energy, वो unfinished energy जो हमने कभी किसी lifetime में छोड़ी थी, and we haven't resolved, that feeling of not being so good, not feeling so good with that soul, उस आत्मा के साथ जो भी रिश्ता रहा हमारा, वो पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुआ था उस जन्म में. जब वो वापस मेरे सामने आई, again the energy which I emits, the energy which she emits was not very right. इसीलिए जो एनर्जी मैंने दी और जो उन्होंने दी वो बहुत सही नहीं थी. इसीलिए the role of forgiveness becomes even more important. इसीलिए क्षमा करना बहुत ही important है. सिर्फ एक व्यक्ति, like between me and Dhriti ji, कोई भी एक जन becomes awakened. कि मुझे पता चल गया, if I forgive, I will be free. Or either Dhriti ji comes to know, if I forgive, then I will be free. If one of us take that conscious decision, एक ही जन,
Otherwise our mind will say, अरे मैंने माफ कर दिया तो क्या हुआ, भृति जी ने नहीं किया तो? Immediately our mind say, उस तुरंत ही हमारा मन बोलेगा। लेकिन हमें अपने मन को बोलना है, कोई भी एक जन, even a single person, one person takes that responsibility कि any energy exchange which has happened between us, कुछ भी ऊर्जा का आदान और प्रदान हमारे बीच में हुआ है किसी भी जन्म में जो सही नहीं था, लेकिन अब मैं जान गई हूँ, नाउ आई एम अवेक, मैं माफी मांगती हूँ, आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस, आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस, आई फॉरगिव, बोथ वेज। माफी मांगनी भी है, माफी देनी भी है। कभी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हमें ही लोगों ने दुख पहुंचाया है, हम भी दुख पहुंचाते हैं, कभी हमारे थॉट्स से, कभी हमारे वर्ड से, कभी हमारे एक्शन से। वी ऑल्सो हर्ट पीपल। इट्स नेवर कि दैट ओनली पीपल हर्ट अस, वी ऑल्सो हर्ट somebody or the else. So it's happened. So इसीलिए if once we are awakened, हम जाग गए अगर, I am awakened now, then I choose to forgive. As I choose to forgive, the karmic account between me and Dhriti start getting settled. That energy exchange which was happening between me and Praveen ji starts getting settled. वो खत्म होने लगता है. And once that energy start getting dissolved, the relationship between me and them improves. हमारे रिश्ते अच्छे होने लगते हैं. That's the first and the foremost importance of forgiveness is when we choose to forgive, it gives us a peace of mind first. It resolves our karmic account. This is a truth of forgiveness. यही सच है, यही सच है. ये one of the layers है forgiveness की. When we forgive, we become free from the karmic tree. We become free from the karmic account. At the same time, जैसे जैसे हम, as soon as we get more deeper into our forgiveness, we realize that the other person is just helping us and supporting us to learn some life lesson. धृति जी मुझे मदद कर रही हैं कुछ सीखने के लिए, जो मैंने सोचा है कि इस जन्म में मैं सीखूंगी. Maybe I have chosen to be more compassionate no matter what. ये मेरा लाइफ लेसन है जो मुझे मास्टर करना है इस लाइफ टाइम में. तो कंपैशन कैसे होगा कि नो मैटर व्हाट कोई कुछ भी करे, देन टू यू फील दैट लव फॉर दैट पर्सन. तो धृति जी हैज चोजन दैट रोल. ठीक है, मैं सुषमा जी को बहुत परेशान करूंगी और देखते हैं वो अपना कंपैशन कितना दिन तक मास्टर कर पाती है. तो शी हैज टेकन दैट रोल. आई हैव असाइन दैट रोल टू हर. मैंने उनको बोला है कि आप मेरे साथ बार बार ऐसा करोगे तो मुझे देखना है कि कितना सच में कंपैशन है मेरे पास. How much compassionate I have become. How much I have mastered this emotion of compassion. So at the deeper level, when any person behaves us in such a way that we feel abused, we feel hurt, we feel insulted, या कुछ भी, अगर हमें कभी भी लगता है कि हमें किसी ने बहुत बेइज्जती की है, बहुत परेशान किया है, तो फ्रेंड, एट द सोल लेवल, एक आत्मा के स्तर पर वो मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं. दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड because they support us to master, they support us by playing that role of an abuser, of a villain. वो चूज करते हैं क्योंकि हमको सीखना है. I need to learn that lesson of compassion. I need to learn that lesson of love. And that's why they choose to be a predator in this life. तभी वो इस रोल को अज्यूम करते हैं. ठीक है, you want to learn this lesson? I become a villain in this lifetime. I become bad for you, and you learn. At the soul level, if we go into the layers of forgiveness, the reason we need to forgive is that we need to re-remember the contract we have made with that soul. उस व्यक्ति के साथ जो हमने एक
समझौता साइन के एक अग्रीमेंट जो बनाया है हमने, उसको हमें अपने आप को याद दिलाना है कि मैंने ही इस व्यक्ति को बोला था। आई हैव टोल्ड श्रुति जी, यू नीड टू बिहेव विद मी लाइक दिस। आपको मेरे साथ ऐसे व्यवहार करोगे, यू विल बिहेव विद मी लाइक दिस, देन ओनली आई विल learn that lesson of compassion. I have assigned that role to her. And because I want to learn something, I have given this role. Dhruti ji being my best soul friend at the soul level, she agreed, okay, I will play this role for you. She agreed कि ठीक है, मैं ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ करूंगी. She agreed to be an abuser. She agreed to be a villain. And in this thing, she agreed, our responsibility increases. क्योंकि उन्होंने अपनी वाइब्रेशन लो करी. He has lowered the vibration to play that role of a villain or an abuser. उनकी वाइब्रेशन लो हो गई. Just to support me to raise my vibration. Because if I forgive, if I hold compassion, my vibration will rise. But if I remember, लेकिन अगर मैं याद रखूं कि उन्होंने ये रोल चूज किया सिर्फ मुझे कुछ सिखाने के लिए, तो if I forgive her, if I ask for forgiveness, if I learn for what forgiveness is, through that which I will be able to master my lesson, तो she will also remember her light. उनको भी याद आ जाएगा. क्योंकि what happened when I choose to forgive, when I ask for forgiveness, when I radiate that energy of compassion, I will support her to remember, to re-remember her light. मैं उनको मदद करूंगी कि वो अपनी भी, कि सच में वो क्या है वो याद कर पाए. नहीं तो what happened if I don't remember that I have assigned her the role. अगर मुझे नहीं याद है, तो अगर वो अपना रोल प्ले कर रही है, बिकॉज दैट्स एन अग्रीमेंट बिटवीन मी एंड हर, मेरे और उनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है, और वो अपना रोल प्ले कर रही हैं. शी इज प्लेइंग दैट रोल. लेकिन मैं भूल गई, और वो भी क्योंकि यहाँ पर आए हैं तो वो भी भूली हुई है. वो तो ज्यादा भूल जाएंगे बिकॉज शी हैज लोअर्ड हर वाइब्रेशन. धृति जी हैज लोअर्ड हर वाइब्रेशन. उन्होंने अपना वाइब्रेशन कम कर लिया है, और मैं भी भूल गई. So what happened if I enter into that circle of judgment, that complaint, that blame, तो क्या होगा, वो भी, उन्हें भी याद नहीं आएगा कि वो कौन है, और मैं भी भूल जाऊंगी कि who am I. So friends, at the deeper layer of a relationship, we need to understand at the deeper consciousness, at the level, at the higher consciousness, हमने एक दूसरे को एक काम सौंपा है कि आप ये काम करोगे मेरे लिए, आप ये काम करोगे मेरे लिए, ये आप ये काम करोगे. So whenever it comes back to us, तो अगर when I met Dhriti ji first time in this lifetime, तो मुझे नहीं अच्छा लगा. लेकिन if I remember, okay, mine, in that past life, something has happened, and again I have assigned her this role, so that we can settle down our karmic account. और मुझे याद आ जाए, अगर मैं याद रख पाऊं कि मैंने ही उनको बोला है, तो I will forgive her and she will be free and I will be free. वो भी मुक्त हो जाएंगे और मैं भी मुक्त हो जाऊंगी. वो भी मुक्त हो जाएंगे और मैं भी. She will be also be free and I will be also be free. इसीलिए to dissolve this, all these, the layers which are not so right, that energy which is not so good of hurt, that resentment, only one person needs to be awakened. सिर्फ एक व्यक्ति. नहीं तो immediately जब भी I speak on forgiveness, I talk, people ask me, अब मेरे माफ करने से क्या होगा? हो सकता है वो मुझे माफ नहीं करे, या फिर सिर्फ मैं ही माफी क्यों मांगू, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है. आई एम नॉट एट फॉल्ट. व्हाई शुड आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस? सो फ्रेंड, इट्स नॉट अबाउट हुज फॉल्ट इट इज. बात ये नहीं है कि गलती किसकी है. इंपॉर्टेंट इज what you want to do with your life. आप अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहते हो? Would you like to have a peaceful life?
or a life which is full of hurt, resentment, anger, irritation? हम क्या चाहते हैं? इसलिए if I choose peace for myself, that clearly indicates that I am ready to forgive. तो इसका मतलब है कि मैं तैयार हूं माफ करने के लिए. I choose to forgive. I am ready to forgive. I choose to forgive. मैं माफ करने के लिए तैयार हूं. मैं माफ करने के लिए तैयार हूं. तो ट्रूथ ऑफ फॉरगिवनेस वन लेयर पे जब होता है कि जब हमें समझ में आए कि इट इज जस्ट बिकॉज वी आर इन द कार्मिक अकाउंट, हम लोग को सेटल करना है, तो फॉरगिवनेस इज द ओनली वे टू सेटल अवर कर्मास. द फर्स्ट थिंग. द अदर थिंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड वी हैव असाइन्ड दैट रोल. हम ही ने उस व्यक्ति को बोला है क्योंकि आई नीड टू मास्टर सम लेसन. The other is that I need to master some lesson. To do two things, we need to be really aware if we want to practice forgiveness in our life. First thing, it is because of our karmic account. We have met, हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ है, और हमें अपना कार्मिक अकाउंट सेटल करना है. इसीलिए मैं I choose to forgive. मुझे माफ करना ही, मुझे माफ करना ही है. I choose to forgive. मैं माफ करूंगी ही. और at the deeper layer, it is just because we have signed the agreement. I have assigned that person to play such a role so that I can master my life lesson. मैंने ही उनको बोला है कि आप ऐसा ऐसा करो, तो जैसे जो मैं सीखने आई हूँ इस दुनिया में, मैं सीख जाऊं. When we remember, then it's just forgiveness becomes so easy. When you will realize that there is no question of forgiveness. मैंने ही अगर दीदी जी को बोला है मेरे साथ आप अच्छे से नहीं बात करो, वो मुझसे अच्छे से नहीं बात कर रही है, मुझे पता चल जाए ये बात कि मैंने ही बोला है उनको, तो फिर मुझे खराब लगेगा. विल आई फील बैड? विल आई गेट हर्ट? विल आई बी एंग्री? तो क्या मैं गुस्सा होंगी, मैं दुखी होंगी, मैं परेशान होंगी, तो क्या मुझे इरिटेशन होगा? नहीं ना. नहीं तो फिर मुझे माफी भी नहीं मांगना. देन आई नीड टू फॉरगिव और आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस. कुछ भी नहीं करना है. देन अ रियलाइजेशन कम्स, मी एंड ऋति जी आर सेम. मैं और वो एक ही है, कोई अलग नहीं. हम एक ही है. वी आर वन ओनली. Then we realize, then we come to that deeper layer of forgiveness, that there is nobody to forgive it. किसी को माफ करने की जरूरत ही नहीं है, ना माफी मांगने की, ना देने की. But it comes at the end, friends. ये सबसे आखिरी में आती है ये स्टेज. When we come to that realization that there is nobody to forgive and there is nobody to ask for forgiveness. किसी से माफी देनी भी नहीं है और लेनी भी नहीं है. ये एकदम 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 enlightening स्टेज है. उसके पहले वी नीड टू सेटल अवर कार्मिक अकाउंट. उसके पहले हमें अपने जो कर्म के खाते हैं उन्हें खत्म करना ही है. वी नीड टू जस्ट क्लोज दैट कार्मिक एनर्जी बिटवीन अस व्हिच इज फ्लोइंग बाय प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस. हमें वो माफी देनी ही है. व्हाट आर दीज डिफरेंट लेयर्स ऑफ फॉरगिवनेस? वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. वी विल सी कि किस किस स्तर पर हम माफी, जब हमें पता चलती है कि माफी देनी चाहिए, that we need to forgive, and how it happens at different layers. कौन कौन सी लेयर्स हैं फॉरगिवनेस की, कैसे कैसे हम माफ करते हैं, किस तरह से हम माफ करते हैं. We will see in our upcoming classes of the series of forgiveness. हम आगे में देखेंगे. आज के लिए let's do a short meditation. I request all of you to gently close your eyes and just be aware of your breathing. Just feel your breath. Allow yourself to breathe. No thoughts whatsoever.
Just close your eyes and tell yourself, I choose to connect with my breath. I choose to go deeper. Allow yourself to breathe. सारा ध्यान सांसों पर, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार. Allow yourself to breathe. Feel your breath. Observe your breathing. Feel your inhalation and feel your exhalation. सारा ध्यान आती हुई और जाती हुई सांसों. Shakalanaha Shaitaha. Let's focus on our heart. अपने हृदय चक्र पे ध्यान देंगे. Shakalanaha Shaitaha. To understand truth of forgiveness. क्षमा की सच्चाई को जानने के लिए हमारे हृदय चक्र को खुला होना बहुत जरूरी है. To understand truth about forgiveness, it's very necessary so that we open our heart. Let's focus on our heart center and let's breathe from our heart. Just feel the opening of your heart center. Kalmana Shaitaha. Kalmanaha Shaitaha. Shaitaha. Allow your heart to be opened up. Just feel your heart. Kalmanama Ashavtaha Shaitaha.
unless and until our heart is open. It's difficult to understand the truth about forgiveness. जब तक हमारा हृदय चक्र खुला नहीं होगा, हम क्षमा की सच्चाई को जान नहीं पाएंगे. Let your heart center be open. Observe your breathing. Just allow your heart to get opened up. Just Shakalanaha Shaitaha. Let's our heart center get activated so that we can see the bigger truth about forgiveness. हम सच देख पाए. The truth is, if I choose to forgive, I become free from the karmic account. एक सच जो सबसे बड़ा है, अगर मैं माफ करती हूँ या माफी मांगती हूँ, तो मैं कर्म बंधनों से छूट जाती हूँ. शकलनाथाः शब्द. Tell yourself, as I choose to forgive, or as I choose to ask for forgiveness, I become free. Shakalanataitai. Namah Shaitaha. Let this truth about forgiveness sip in deeper and deeper in our energy. ये सच जो क्षमा के लिए है, शकलना तो कलमनाहा शैता. ये सिद्धांत की सच्चाई हमारे जीवन में और गहरी उतर जाए. Let's the truth of this concept sip in even more deeper in our energy field. Kalmanama Shaitaha. Once our heart center is open, we realize forgiveness sets us free. जब हम क्षमा की सच्चाई को जानने लगते हैं, हम जान जाते हैं माफी हमें मुक्त करती. शकलनाता ताना कलमनाहा शैतान.
Just tell yourself and give yourself the permission. Now, as I understand the truth about forgiveness, क्योंकि अब मैं क्षमा के पीछे की सच्चाई को जान गई, मैं क्षमा मांगती हूँ और मैं क्षमा करती हूँ। इर्रिस्पेक्टिव कि मेरा मन बोले कि मेरी गलती नहीं थी, मेरी तो कोई फॉल्ट ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और भी पता नहीं क्या क्या। मन को चुप कराएंगे। We will silence our mind and we will tell our mind, I deserve peace. I deserve liberation. Therefore, I choose to forgive. क्योंकि मेरे जीवन में शांति हो, मुझे मुक्ति मिले, इसीलिए मैं क्षमा करना, इसीलिए मैं क्षमा करती हूँ। शकनमनाताः कलहाशोदे। Once we give the right reason, the right thought to our mind, our mind listen to us. जब हम अपने मन को एक सही तर्क, एक सही विचार देते हैं, तो हमारा मन हमारी बात सुनता है। Once I tell my mind, the right reason, our mind cooperates. शकलनाः शैत। हमारा मन हमारा साथ देने लगता है। मन को बताना है, I choose peace. Need to tell a mind, I choose peace. At the same time, another thought which I need to tell a mind, it is because of the karmic account that the other person is behaving in a certain way. यह मेरे कर्म की वजह से ही है कि सामने वाला व्यक्ति इस तरीके से बर्ताव कर रहा है। So, tell yourself, I take the responsibility of my life. I take the responsibility of all my actions. मैं अपने हर एक कर्म की जिम्मेदारी लेता हूँ। And so, in any lifetime, in any ways or means, I have hurt that person, I choose to ask for forgiveness. कभी भी किसी भी जिंदगी में मैंने किसी भी व्यक्ति को दुख पहुंचाया है
तकलीफ पहुंचाई। मैं माफी मांगती हूँ। Shakalanataha Shaitana. Let's ask for forgiveness. Once we understand the truth about forgiveness, जब हम सच्चाई जानेंगे माफी की, तभी हमारे लिए माफी मांगना आसान होगा। Otherwise, our ego stops us. नहीं तो हमारा अहंकार हमें रोकता ही रहता है। Just allow the energy to flow easily. Let this understanding get deepen in you. ऊर्जा को बहने दीजिए अपने अंदर। कलनाहा शक्ल। Allow your heart center. Feel the expansion of your heart as you get this understanding. आपका हृदय चक्र और बड़ा होने लगता है जैसे जैसे ये अंडरस्टैंडिंग आने लगती है क्षमा के बारे में, तो हमारे लिए क्षमा करना आसान हो जाता है। As we gain this understanding, it becomes easy for us to forgive. Kalmanama manahashotaha. Namhashotihish, namhashotihish. Namhashotaha, namhashotaha. Namha, namha. Just be in this space. Allow your heart center to expand. Just feel your breathing. And feel your heart expanding. नमाकलहा शैतान। महसूस कीजिए अपने हृदय चक्र को खुलते हुए और भी ज्यादा और भी ज्यादा। जैसे जैसे हम क्षमा की सच्चाई से अवगत होते जा रहे हैं, हमारा हृदय चक्र खुलता ही जा रहा है, खुलता ही जा रहा है। As this deeper understanding embrace our being, our heart center is getting expanded and expanded. Shakalanataha, kalmanamaha shaitana, kashakataha, kashakataha, kashkataha, kashkataha, shakalanaha shaitana. Let our heart center remain open so that
to forgive and to ask for forgiveness becomes easy for us. माफी देना भी और माफी मांगना भी हमारे लिए आसान हो जाए. Feeling this vibration, feeling this love. Just slowly and gradually return back to your body. धीरे से हम अपने आप को अपने शरीर में महसूस करेंगे. Open your hands, keep it on your eyes. Once you feel complete, you can open your eyes and come back. Be in this space as long as you want.